For you to crack CAT and get a 99 percentile in the next 150 days, there are exactly three things that you need to do. Number one, believing in the fact that you can crack CAT in the next 150 days. Extremely important. Two, drawing out a plan of action of all the things that you need to do in the next 150 days. And three, actually putting in the work and doing those things each day. This is the simplest formula for you to crack CAT. And in this video, I will discuss the intricacies of these three things which I've spoken to you about, my dear friends. This is going to be the only video that you need to get a 99 percentile in CAT this year, because the plan of action is going to be simple, straightforward, and you will know what exactly you need to do each day. If you don't know me yet, I'm Darpan Saxena, an MBA graduate from IIM Udaipur. I have been the MBA product head at Career Launcher. I'm the founder of Creatum, where I help MBA students create fulfilling careers beyond the campus placements. My dear friends, the idea is very simple. If you're somebody who's starting off your prep right now in July, my objective is to make you believe in the fact that you can ace the exam even right now. Also, if you've been somebody who's been watching my content for quite some time and you've already started to prep, then this video will help you calibrate your prep कि भाई तुम सही चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो. That is what the objective is. Without further ado, let me take you through what is it. Now, I always start off with this because this is very important for somebody who does not know about CAT to know it, and for somebody who knows about CAT to also remind themselves that, hey, how much score do I need in the exam to get a 99 percentile, because that is what our aim is. And I've compiled the data of the last 4 years. As you would know, CAT is usually a 198 marks. Now, let me assume it to be 200 marks overall. The total exam is of 200 marks. If you see for CAT 2025, you will be surprised to see that a 99.5 percentile, forget even a 99, a 99.5 percentile was at 93 marks, which is less than 50% marks of the paper. तो मतलब पूरे पेपर में अगर आप 50% से कम भी सॉल्व करके आते हैं या 50% नंबर से कम परसेंट नंबर लेके आते हैं, आप 99.5 परसेंटाइल लाके ABCLKI इन सब की कॉल्स ला सकते हैं. That is what the thing is. The reason why I put out this data each time is because we are trained all across our schooling, all across our college, that more marks, closer to the maximum marks is the ideal deal. That is what you need to do. CAT completely changes this. You need to have a different mindset for CAT. This should also liberate you in some way. इससे ये देख के तुम्हें थोड़ा आराम भी महसूस होना चाहिए कि हाँ, इतना मुश्किल नहीं है जितना हम समझ रहे हैं. And again, is the same thing for each year from there. अगर हम पीछे भी जाएं, a 99 percentile is at a 95 marks, less than half the marks of the overall. A 99 percentile is 75 marks or be come. And in CAT 2022, a 99 percentile is at 84 marks. If you want to screenshot this, please feel free to screenshot this, because this should be in front of you. You should know this. You should keep this in your mind. This was my answer for what you need to do. तो मैं basically करना ये है, let me put it into words, that by the day of CAT के दिन तक you need to become a person who can score 90 marks or 95 marks in CAT. That is the kind of person you want to become. My objective in this video is to not tell you what to do to score well. My objective in this video is to tell you what to do for you to become that person who gets a 99 or a 99.5 percentile. That is what the objective is. Now let me take you through how do you need to do this. How do you actually reach a point wherein you are getting a 90 plus marks in your CAT and in your mocks as well. Now you need to understand there are 4 elements to your preparation, and these 4 elements are right there in front of you. You need to learn the concepts, you need to practice those concepts by solving questions, and then you need to test yourself. All through this you need a layer of mentorship also, so that you do not get lost. Now here is the thing, and this is extremely important. Had you started CAT prep way back in say January or February, I would have told you that the structure of these 3 layers or these 4 layers is like this, that you learn, then you practice, and then you do mocks. And this entire thing is in the circle of mentorship. अगर तुमने Jan में शुरू करा होता, मैं ये कहता तुमसे कि ये sequential है. Right now this is not sequential anymore. Right now all these 4 are like 4 parallel tracks. Please believe me, these are 4 things which you need to do parallelly. You need to learn parallelly, you need to practice questions of that concept which you are learning, as well as testing, which is mock taking, that also you need to do. Now having said that, let me take you through what these are. Learning is a very simple thing. You need to know that there is a syllabus, at least in quant there is, and you need to learn it. Now specifically, if I were to say to you, quant is the only area in CAT which has a syllabus, which is arithmetic, algebra, number system, geometry, modern math. Now what I want to say is that quant is the only section which is learning intensive, जहाँ पे actually तुम्हें learn करना पड़ेगा, because concepts बहुत हैं इसके अंदर ये. If I were to talk about DILR and VRC, this does not have a syllabus. इसमें कोई syllabus नहीं है, but just for your comfort, so that you know what you have to prep, I have put together that the various kind of DILR sets which come, उनको अगर
हमें कैटेगराइज करना है तो वो किस कैटेगरीज के होते हैं, वो ये है अरिथमेटिक बेस्ड डीआई, रीजनिंग बेस्ड डीआई, अरेंजमेंट, शेड्यूलिंग, ऑर्डर्स एंड रैंकिंग, वेन डायग्राम, रूट्स, गेम्स, स्टैटिस्टिक्स बेस्ड एंड मिसलेनियस, ये सबके। VARC में भी देयर इज नो कोर्स बट ब्रॉडली द काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कम आर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल्स, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन, ऑड सेंटेंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स, जो मैंने लिखा नहीं है। व्हाट यू नीड टू नो अबाउट दिस इज दैट दिस इज मोर प्रैक्टिस ओरिएंटेड, बिकॉज इसके लिए भी टू फॉर यू टू सॉल्व दिस यू डोंट नीड टू लर्न थ्योरी, यू जस्ट नीड टू लर्न एन अप्रोच कि अच्छा जो फैकल्टी है उसने ये टाइप का DILR से कैसे अप्रोच करा था, बिकॉज दिस इज इंटायरली लाइक सॉल्विंग पजल्स। तो ये कहानी इसकी, एंड दिस इज बेसिकली यू बीइंग एबल टू अप्लाई लॉजिक टू लैंग्वेज, दैट इज व्हाट VARC is. Apart from that, there are certain non-negotiables which you need to learn, which is squares of numbers from 1 to 50, cubes होने चाहिए, fractions ये तुम्हें याद होने चाहिए. This will enhance your speed. That is the broad idea of the course which is there, which you need to learn. ठीक है, अब इसमें भी basically learning का समय तुम्हारा quant में ज्यादा जाएगा. That is where you need to spend most of your time. If I come to practice is basically what? Practice is basically either you're practicing the questions from previous year questions of CAT, or you're practicing it from the sheets given by the coaching institute where you are enrolled, or by the study material which is provided to you by any coaching which you are following. I have said not and, I'm saying or. इसमें से कोई एक भी पकड़ के पूरा कर लोगे तुम CAT क्रैक कर लोगे. I'm not even kidding. See, contrary to the popular belief, cracking CAT is not about solving 1000, 2000 questions, as many questions as you can. It is about solving a respectable number of questions, and I'll tell you what that respectable number is, but solving them like that कि वो तुम्हें वो जितने सवाल तुमने करे वो तुम्हारे जहन में फिट हो गए कि भाई इसका अप्रोच ये है, इसमें फॉर्मूला ये यूज होता है, इसमें ये ट्रिक यूज होती है, दैट इज इट. इसीलिए मैं कहता हूं कि भैया मल्टीपल सोर्सेस का कोई काम नहीं है कैट में. आप इसमें से कोई भी एक सोर्स पकड़ लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यू कैन गेट एनी बुक व्हिच हैज डिवाइडेड द प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चंस एज पर द टॉपिक्स, वो के लो. या अगर तुम किसी कोचिंग में एनरोल हो तो उनकी शीट्स और ये भी अगर एक भी स्ट्रीम पूरी कर गए अच्छे से ईमानदारी से कर जाओगे. टेस्टिंग इज अबाउट व्हाट? टेस्टिंग इज नॉट जस्ट अबाउट मॉक्स. एनी गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट wherever you might be enrolled in gives you 3 kinds of tools to test yourself. One is a topic test. So say for example arithmetic के अंदर अगर प्रॉफिट एंड लॉस तुमने करा है तो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर भी टॉपिक टेस्ट होंगे, या फिर सेक्शनल भी होंगे. सेक्शनल मींस क्वांट का एक फुल टेस्ट, BRC का फुल टेस्ट, DILR का फुल टेस्ट वो होगा. एंड फिर फुल लेंथ मॉक्स, मतलब जैसे कैट एक 2 घंटे का एग्जाम है वैसे ही 2 घंटे का मॉक भी होगा. ये तुम्हें चाहिए ही चाहिए. ये मैं बता रहा हूँ कि what are the things which you need to do. Mentorship always missed by students, but more missed when they are not able to score well, because then they think अरे गाइड करने के लिए कोई नहीं था. What happens, my dear friends, is that the biggest thing which you will be feeling right now also is that we don't know whether we are doing the right things or not. We don't know what to study now. We don't know how to study. We don't know if we are doing enough. At times it happens that we are motivated to study. On most days it happens that we are not motivated to study and we are feeling lost. We are confused whether this is for me or not. For that you need mentorship. You need somebody, any student who books a one-to-one call with me, I help them with these things. So वो तो मतलब एक चीज है. I always ask them that do you have somebody around you who can help you with your prep and who's always going to keep you accountable or not. एक mentor figure तुम्हारे लाइफ में है कि नहीं जो कि तुम्हें पर्सनल 1-to-1 बात कर सके वो. That is why when a lot of students over the last 7-8 years since when I've been doing this, when they told me that that they don't have anyone who can guide them. फैमिली में तो कोई है ही नहीं. हो सकता है फैमिली में you're the first one who's planning to think about an MBA. तो कैसे करोगे? इसके लिए यार मेरे पास 2 चीजें. One is I have a Telegram group by the name MBA Career Freedom. You can get the link of that in the description. There are a lot of other students over there. I also respond there at times using voice notes so that I can help you as much as I can, but this is not the fastest way to reach me. I have developed a full personal one-to-one mentoring program in which I connect with you one-to-one regularly and I keep you accountable for your prep. My dear friends, if you don't have a mentor or somebody who can guide you, be it your friend, your brother or your sister, you need this. I'm not even kidding. There's only one chance of you getting into CAT, because I know हम सोचते हैं चांसेस बहुत हैं, मगर एक बार जब नंबर कम आते हैं we get so demoralized that we think that यार जो 20 को मिल रहा है ना कोई आते हैं. Then family says also कि यार जो मिल रहा है चले जाओ. बचो उस चीज से. इसमें कोई समझदारी नहीं है कि अरे यार मैंने ना ज्यादा प्रेप नहीं करा, मैंने किसी की हेल्प नहीं ली. नहीं, take as much help as you need. If you want to connect with me and get my mentorship, scroll down, get my mentorship program. It's from right now till CAT, so you will be in safe hands. That's that, my dear friends. This is all that you need that for you to prepare for CAT. This is extremely important for me to put it here as it is. Now let me tell you, my dear friends, that by when do you need to do what. So this is going to help you schedule your prep properly, because this is extremely essential. Now see, from July to November if you were to see, तुम्हारे पास 21 हफ्ते हैं. अब ये 21 हफ्ते ही तुम्हारी रियलिटी है. योर इंटायर टाइमलाइन इज 21 हफ्ते. अब ये जो लर्निंग, प्रैक्टिस और
और मॉक टेकिंग मैंने तुम्हें समझाया था, इसमें तुम्हें 21 हफ्ते में करना क्या है। लर्निंग में देखो, योर प्रेडोमिनेंट टाइम इज गोइंग टू गो इनटू क्यूए। क्यूए के प्रेप में तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा समय जाएगा, बिकॉज दैट्स द ओनली एरिया विच इज लर्निंग इंटेंसिव। माय डियर फ्रेंड्स, ब्रॉड ब्रेकअप तुम्हें जहन में अपने रखना होगा। ये अगर तुम अभी स्टार्ट भी कर रहे हो, सी दिस एज द बेंचमार्क्स बाय व्हेन यू नीड टू बी कंप्लीटिंग व्हेन। दिस इज द फुल कोर्स ऑफ क्यूए। बाय जुलाई you need to get done with arithmetic and algebra. You have to get done with arithmetic for sure and some bit of algebra. In August, you can carry on algebra and wind up the remaining, but also complete geometry within August. So effectively, I am saying in 2 months, which is a lot of time, you have to complete these 3 topics: arithmetic, algebra, geometry. जिसमें algebra you might start off right now in July, or you should start off right now, and it will seep into August as well because it is huge. Yeah. And then September में you are winding up numbers and modern math. My dear friends, what I'm trying to tell you is that तुम्हारा कोर्स सितंबर एंड तक खत्म हो जाना है किसी भी हालत में। तुम अगर जुलाई में शुरू कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारा 3 महीने से ज्यादा तुम अपना क्वांट का कोर्स खत्म कर रहे हो। क्वांट कोर्स खत्म करना 3 महीने का खेल है टोटल। अब अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ आई वर टू स्पीक अबाउट से DILR and VARC, it's a very simple. Spend July in learning whatever concepts or approach you need to see. उसके बाद इसमें कुछ देखने के लिए बहुत नहीं है। उसके बाद तुम्हें पूरी प्रैक्टिस का खेल है ये। एक बार तुमने 10, 20, 30 सेट किसी गुरु को सॉल्व करते हुए देख लिए, अगर उसके बाद यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू सॉल्व मोर सेट्स। और वो सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन में यू कैन चेक कि अच्छा यार ये कैसे होता है सॉल्व। बट उसमें तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि कॉन्सेप्ट खत्म करने का वेट करना है, उसमें कॉन्सेप्ट नाम की कोई चीज नहीं है। दैट इज व्हाई आई आल्सो से दैट स्टूडेंट्स नीड टू स्टार्ट टेकिंग मॉक्स फ्रॉम day 1. Why? Because 2 sections out of the 3 they do not have a course, which means 66% of the paper does not have a course. So what are you waiting for? Only the remaining 33%, which is 1 section out of 3 QA, has a course. तो उसमें तो फिर भी मैं समझता हूँ कि चलो कोर्स खत्म होगा तो मैं करूंगा, मगर अब अगर तुम जुलाई में कैट प्रेप शुरू करो, you do not have the luxury to wait for your course to get done with. Please believe me, your mock taking should happen from right now. Now let me tell you what all things you need to do in practice and by event. See, देखो benchmark बता देता हूँ। मुझसे students they ask me that, sir, how do we know that we completed a topic? There is no singular answer to it, but there is a tentative benchmark through which you can safely say कि यार मेरा हो गया, वो ये है। I am saying this with years of experience कि इतना करोगे तुमने बहुत मेजर सरफेस एरिया ऑफ द कोर्स खत्म कर लिया। अरिथमेटिक अलजेब्रा के 200 सवाल और ज्योमेट्री और नंबर्स के 100 सवाल, ये टोटल 600 सवाल है। इसमें यू वुड ऑब्जर्व मैंने मॉडर्न मैथ इंक्लूड नहीं करा है। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई, बट करने हैं तो उसके भी 20, 30, 40, 50 सवाल सॉल्व कर सकते हो। मोटा माटी 600 सवाल है। दिस इज नॉट द मैक्सिमम आई एम टॉकिंग अबाउट कि मैक्सिमम 600 कर लोगे, सब नहीं। मैं कह रहा हूं कम से कम यार 500-600 सवाल करके नहीं जाओगे तो तुमने सरफेस एरिया कवर नहीं करा हुआ है। मेरा कहना ये है, हो सकता है 600 सवाल एसेंशियल भी हो, बहुत हो, बट एटलीस्ट 600 क्वेश्चंस विल मेक यू रेडी फॉर कैट। दैट मच आई कैन टेल यू फॉर श्योर। 600 सवाल कर लोगे, रेडी हो जाओगे। अरिथमेटिक अलजेब्रा में ज्यादा इसलिए बिकॉज दे हैव लॉट मोर सब टॉपिक्स विद इन देम, देयरफॉर दिस इज हाउ यू विल बेंचमार्क योर प्रेप। नाउ इफ यू सी, तुम्हें ये लग रहा होगा 600 सवाल तो बहुत है। 600 सवाल कैसे बहुत है? 600 सवाल हैं और 150 डेज हैं। 600 डिवाइडेड बाय 150 अप्रोक्सीमेटली 4 सवाल। अब तुम मुझे कह रहे हो कि तुम क्वांट में पर डे 4 सवाल भी नहीं करोगे सॉल्व। नहीं, अभी व्हेन आई विल टेल यू द डेली शेड्यूल व्हिच आई विल शेयर विद यू, यू विल बी सॉल्विंग मोर देन 600 सवाल। यू विल बी सॉल्विंग लिटरली 10 क्वेश्चंस पर डे, एटलीस्ट 10-15 क्वेश्चंस पर डे। दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। एंड इन मॉक टेकिंग, यार देखो सीधी सी चीज है, इन जुलाई, अगस्त, सितंबर व्हेन यू आर स्टिल कंप्लीटिंग योर क्वांट सिलेबस, यू हैव टू टेक 1 mock per week. Please take a mock by the end of this video. After you watch this video, please take a mock. That will approximate to around 12 mocks because 12 weeks. October and November you will reach at least 2 mocks per week. At least 2 mocks per week. That is around 3 months because 8 weeks. Totally, if you can see, you are solving at least 25 to 30 mocks. This is approximately 28 mocks. तो ये कहानी है। तो जो कहते हैं ना कि 25 mocks करने हैं, ये करने हैं, वो वाकई सही है। Please comment down on this video if you've had a aha moment and you've got the clarity. Please let me know that yes, I've got clarity from this video. I want you to write down in the comments, not for me, but I'll tell you why. When you write it down with your physical hands, yes, I've got clarity, your mind starts believing that yes, now the plan of action is clear. Please do it for your own sake. Do it so that you now know from this video कि मैं procrastinate नहीं करने वाला। जो मुझे plan of action चाहिए था वो मेरे पास है। अब मैं फटाफट से बता देता हूँ कि यार तुम्हारा डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए, ये कैसे तुम इसको टैकल करोगे, which is how do you need to do it. अब इसमें मैंने यार देखो ब्रॉड बेस्ड कैटेगरीज क्रिएट करी है कि वीकडेज और वीकेंड्स में क्या करना है, एंड दिस इज फॉर एवरीबॉडी. दिस इज फॉर समबडी हु इज अ वर्किंग प्रोफेशनल हु हैज लेस देन 4 hours a day, and this is for somebody who's free at home and who can give everything to their CAT prep also. उन दोनों के लिए है. पहली चीज है भाई, अगर तुम्हारे पास 4 से ज्यादा आवर्स हैं इन अ डे, कंसिडर सॉल्विंग और प्रैक्टिसिंग ऑल 3 sections per
day, it might help you. But if you have anything less than 4 hours or 4 hours per day, then do this. Every day you are studying your weakest area, or in this case I will change it to every day you are studying at least quant, and alternate quant with either of the two. So one day it will be quant and DILR, then the other day it will be quant and VARC. That is how you will study this. तो इसको मैं change करता हूँ quant पे. That is what your reality is from right now. If I were to speak about quant, I have created a module for you कि भाई तुम जिस दिन quant कर रहे हो तुम्हें करना क्या है. Learning means videos. You might be enrolled in a coaching institute, वहां पे कुछ सामान मिला होगा तुम्हें, watch करो and 15 सवाल solve करो. अब ये 15 सवाल उन वीडियोस के अंदर के भी हो सकते हैं एंड उसके बाहर के भी हो सकते हैं. प्रेफरेबली ये 15 सवाल वो होने चाहिए जो तुमने खुद मेहनत करके सॉल्व करे हो. बेशक वो तुमसे सॉल्व हुए हो या नहीं हुए हो, मगर तुमने इत्मीनान से हर सवाल को 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट सॉल्व करने की कोशिश करी हो. ये वो सवाल है. टोटल 15 सवाल. तुम 3 आवर्स का एक मॉड्यूल समझ के चलो इसको. दैट्स दैट. DILR and VARC you have to give 1 hour each whenever you are studying. In DILR, please solve 2 sets in one sitting. That is why I've said 1 hour. 1 hour is for everything. 1 hour is for you to solve the 2 sets and also then try to see the analysis of it कि कैसे solve होना था. बहुत जरूरी चीज एक और है, ये 1 hour शायद थोड़ा extend भी हो सकता है by half an hour. Why? Because if you've not been able to solve a set, then my dear friends, hello, this is extremely important. If you've not been able to solve a set, then I would want you to watch how to solve it and then get back and solve it again. Don't leave it at कि अच्छा मैंने solve करा, अरे नहीं solve हो रहा, अब मैंने check करा solution, हाँ समझ आ गया कैसे करना. नहीं समझ नहीं आया, बंद करो solution, दोबारा से solve करो. That is how you do it. That is how you ace DILR. That is how you maximize the ROI you've spent on the time you're spending on DILR. That's the secret. In VARC, I would say the same thing. Do 2 RCs in one sitting and 1 VA set. 1 VA set मतलब 8 सवाल VA के उठा लो. इतना करो, ये भी 1 hour का है. अब इसमें भी whenever you are stuck, say suppose you are somebody who's good at VARC and you're stuck, connect with me on a 1-to-1 call because then I will be able to suggest you more exercises, more different ways to solve that. अगर ये सब करने के बावजूद भी तुम stuck हो, there are so many other ways which I can prescribe you if you connect with me, because then that will be subjective to where you're stuck. Weekends are about mock test. So one prescribed way is that on Saturday you spend your 2 hours in taking a mock test and on Sunday you do the mock analysis for 6 hours because for each section you are giving 2 hours. तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सैटरडे को अगर 2 घंटे का ये मॉक दिया तो कुछ और नहीं करना है, कुछ भी कर सकते हो उसके साथ, मगर बेसिक स्ट्रक्चर तुम्हारा कैट प्रेप का ये है. माय डियर फ्रेंड्स, माय ऑब्जेक्टिव इन दिस वीडियो वाज वन वेरी सिंपल थिंग, दैट हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर कैट in the most effective manner such that you know exactly that what all you need to do, when you need to do it, and there is no leakage of time in your CAT prep. My biggest concern is that there is so much content out there that there is almost always going to be leakage in your time, in your effort. I want you to be focused. The best way to do it is connect with me. There's a full-fledged mentorship program which I have. That is the best thing which you can do for yourself, because that is the biggest commitment you will make to yourself, that yes, I'm committed to this year's CAT. Otherwise you can be, अरे नहीं यार mentorship ले ली तो मुझे किसी को रेगुलरली रिपोर्ट करना पड़ेगा कि मैंने क्या करा, तो वो तो तुम्हें मालूम है फिर कि तुम्हारी इंटेंशन क्या है. सो प्लीज टेक इट सीरियसली. लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट डिड यू फील फ्रॉम दिस वीडियो. आई वांट टू नो दैट हाउ यू आर फीलिंग अबाउट योर कैट प्रेप. लेट मी नो. थैंक्स अ लॉट. गुड बाय.